हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके पहले हमने बताया कि द प्रिंस ऑफ मोरक्को सही टोकरी चुनने में असफल हो जाते हैं, इसलिए वह खाली हाथ और भारी हृदय के साथ पर्दे से गायब हो जाते हैं। अब यह वेनिस का दृश्य है, ठीक है। सैलेरियो और सैलेनो, एक नया कैरेक्टर है, सैलेरियो और सेलेनियो, ये दोनों पर्दे पर दिखाई देते हैं। ये दोनों अंटोनियो के वेल विशर, शुभ चिंतक। सेलेनो और सेलेनियो साइलाक के बारे में बात कर रहे हैं जो पागल हो गया, क्योंकि उसकी पुत्री जेसिका अपने प्रेमी लारेंजो के साथ भाग गई। तो एक पागल आदमी की तरह साइलाक वेनिस के सड़क के बीचों बीच रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्रंदन कर रहा है। वह कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे हाथ खाली हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसकी पुत्री जिसका बहुत सारे ड्यूकेट्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी लेकर के घर से भाग गई है। लेकिन साइलाक एक बहुत बुद्धिमान आदमी है। वह तुरंत संदेह करता है कि यह कोई नहीं है, बेसेनियो है, जिसने उसकी पुत्री जेसिका को उसके प्रेमी लारेंजो के साथ भगा दिया। ठीक है। इसलिए साइलाक ड्यूक को सलाह देता है, द ड्यूक, न्यायाधीश ड्यूक को सलाह देता है कि आप जाएं और बेसेनियो के जहाज को चेक करें जो बेलमंट जा रहा है। पोर्सिया की साइलाक की सलाह पर द ड्यूक जो है वह समुद्र के किनारे पर जाता है ताकि वह बेसेनियो के जहाज की इंक्वायरी कर सके। जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचता है, कौन? ड्यूक, उसे पता लगता है कि बेसेनियो का जहाज बेलमंट के लिए पहले ही रवाना हो गया। वहां पर जिसका का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से निराश होकर के ड्यूक साइलाक के पास वापस आता है और उसे बताता है कि वहां उसकी पुत्री का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि बेसेनियो का जहाज बेलमंट के लिए रवाना हो चुका था। इसके द्वारा ड्यूक के द्वारा किए गए सारे प्रयास किया जाते हैं, व्यर्थ जाते हैं। उसी समय इस समाचार को सुनकर के एक बार साइलाक फिर पागल हो जाता है और एक पागल आदमी की तरह सड़क के बीचों बीच रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है और कह रहा है कि वह तो बर्बाद हो गया, उसके हाथ खाली हैं, क्यों? उसके घर में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उसकी पुत्री जिसका बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, ड्यूकेट्स, ज्वेलरी सब लेकर के घर से भाग गई। ठीक है। उसी समय सेलेनो और सेलेनियो को पता लगता है कि समुद्र में एक जहाज क्या हो गया, डूब गया। इस समाचार को सुन करके सेलेनियो और सेलेनियो अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति करते हैं और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, वह जहाज अंटोनियो का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंटोनियो द फॉर्म ऑफ मॉरलिटी, नोबिलिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, यह ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वर्दी, पंक्चुअल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर है। यह अपने आसपास रहने वाले लोगों के बीच में खुशियां बांटता है। यह हमेशा दुखियारे और जरूरतमंद की मदद करने वाला है। इसलिए हे विधाता, यह जहाज अंटोनियो का नहीं होना चाहिए। अब सेलेरियो और सेलेनियो दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो किसके घर चला जाए, अंटोनियो के घर, ताकि उसको राहत और सांत्वना दी जा सके। इतना समझ गए? तो शुरू करते बेटा। हमने आपको बताया बेटा इसके पहले आपको बताया कि द डॉटर ऑफ जिसका हैज रन अवे विथ हर लवर नेम्ड लारेंजो with a lot of diamond, ducats, ornaments, jewelry from the house of her father. Jessica has run away with her lover named Lorenzo. Now it is the scene of Venice का दृश्य। Salerno and Salerio, both of them appear on the stage.
As and when they appear on the stage, they are talking about Shylock who has gone mad because his daughter Jessica has done away with her lover named Lorenzo. So like a madman, like a Shylock is crying, weeping and lamenting on the middle of the road. He says that he has been ruined. His hands are empty. Nothing is left in the house because his daughter Jessica has done away with a lot of diamond, ducats, ornaments, jewelry from the house. Nothing is left in the house, यार. घर में कुछ बचे नहीं. No. Saying so, Shylock is crying, weeping and lamenting on the middle of the road in Venice. But Shylock is the man of wit and intelligence. He at once suspects that it is none but Bassanio who has made his daughter Jessica run away with her lover named Lorenzo. So Shylock advises the Duke that he should go and inquire of the ship of Bassanio going to Belmont. His daughter is there. His daughter is in the ship of Bassanio going to Belmont. So on hearing the advice from the tongue of Shylock, the Duke goes to the shore of the ship for the inquiry of the ship of Bassanio going to Belmont. As and when the Duke arrives at the shore of the sea, he comes to know that the ship of Bassanio has already departed to Belmont. There is no sign of the daughter of Shylock named Jessica. All the efforts made by the Duke in the search of Jessica goes in vain. So, being disappointed and with empty hand, the Duke comes back where Shylock is and tells him that the ship of Bassanio has already departed to Belmont. There is no sign of his daughter named Jessica. On hearing this information from the tongue of the Duke, once again Shylock goes mad. Like a madman, he is crying, weeping and lamenting on the middle of the road. He says that he has been ruined. Nothing is left in the house. His daughter Jessica has run away with a lot of diamond, ducats, jewelry, ornaments from the house. There is not a single paisa in the house for taking tea. चाय पीने के लिए तक के पैसा नहीं उसने छोड़ा. ठीक है? In this way, Shylock goes mad. In the meantime, Salerno and Selenio, both of them come to know about a ship being sunk in the sea. On hearing this information, Salerno and Selenio feel boundless grief in their heart. The current of sorrow, sadness and grief is running at their face. They pray to God that ship must not be of Antonio, because Antonio is the form of morality, nobility, honesty and truth. He is duteous, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, honest and sincere. He is always helpful to the needy and painful. He always imparts welfare and well-wishes among the public living around him. So, they pray to God that ship must not be of Antonio, वह ship Antonio का नहीं होना चाहिए. Afterwards, Salerno and Selenio, both of them make a plan to go to the house of Antonio to console, comfort and solace him. कितना समय लगेगा? कुछ समय पक्का शुरू करें. हमने आपको बताया इसके पहले बताया था the Prince of Morocco faced to choose the right casket containing the photograph of Portia. So, with empty hand and heavy heart, the Prince of Morocco disappears from the sight. अब आगे देखिए. Now it is the scene of Venice. Venice का दृश्य है. Salerno and Salerio, both of them appear on the stage. As and when they appear on the stage, they are talking about Shylock, who has gone mad because his daughter Jessica has run away with her lover named Lorenzo. Like a madman, Shylock is crying, weeping and lamenting on the middle of the road. He says that he has been ruined. His hands are empty because his daughter Jessica has run away
with a lot of diamond, ducats, ornaments jewelry from the house. Nothing is left in the house, yaar. There is not a single paisa in the house for taking tea. Saying so, Sailak has gone mad. ऐसा कहते हुए साइलाक जो है क्या हो गया, पागल हो गया. No, but Sailak is the man of wit and intelligence. He at once suspects that it is none but Bassanio who has made his daughter Jiska run away with her lover named Laranjo. So Sailak advises the Duke that he should go and inquire of the ship of Bassanio going to Belmont. His daughter Jiska is there in the ship of Bassanio going to Belmont. On hearing this advice from the tongue of Sailak, the Duke goes to the shore of the ship for the inquiry of the ship of Bassanio going to Belmont. As and when the Duke arrives on the shore of the sea, he comes to know that the ship of Bassanio has already departed to Belmont. There is no sign of his daughter named Jiska. Jiska का वहाँ कोई नाम निशान नहीं. All the efforts made by the Duke in the search of Jiska goes in vain. So with empty hand, the Duke comes back where Sailak is and tells Sailak that the ship of Bassanio has already gone to Belmont. There is no sign of his daughter named Jiska. On hearing this information from the tongue of the Duke, once again Sailak goes mad. Like a madman, Sailak is crying, weeping and lamenting on the middle of the road. He says that he has been ruined. His hands are empty. Nothing is left in the house because his daughter Jiska has run away with a lot of diamond, ducats, ornaments jewelry from the house of her father. There is not a single paisa in the house for taking tea. Saying so, Sailak goes mad. In the meantime, Salerino and Salerio, both of them come to know about a ship being sunk in the sea. On hearing this information, Salerio and Salerino feel boundless grief in their hearts, because they are the well-wishers of Antonio. So they pray to God that ship must not be of Antonio, because Antonio is the form of morality, nobility, honesty and truth. He is duteous, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, honest and sincere. He always imparts welfare and well-wishes among the public living around him. He is always helpful to the needy and painful. So they pray to God that ship must not be of Antonio. वह ship Antonio का नहीं होना चाहिए. Now Salerio and Salerino, both of them make a plan to go to the house of Antonio to console, comfort and solace him. बाकी बेटा अगले एपिसोड में. ठीक है.